Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Waqar Ahmed Malik and I will teach you mathematics in grade 9. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुल्क की सतह पर ये जो वबा फैली हुई है इससे निकलने के लिए रब के हुजूर खुसूसी दुआओं का अहतमाम कर रहे होंगे कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमान उम्मत को इससे महफूज फरमाए. First of all, I will introduce you with the topics for which you will study in grade 9. Topics for first term are unit number 4 to unit number 12. Algebraic expression and algebraic formulas, factorization, algebraic manipulation, linear equations and inequalities, linear graphs and their application, introduction to coordinate geometry, congruent triangles, parallelograms and triangles, and unit number 12 is line bisector and angle bisector. These chapters we will study in grade 9, and first 3 units you have studied in pre-9th or 8th class, which also we will revise these chapters at the end, and your first term will be based on these 12 chapters in October or November, inshallah. Now we will start with the unit number 4, which is algebraic expressions and algebraic formulas. Algebraic expressions and algebraic formulas, which is unit number 4, and we will start with unit 4. First, if you notice the title of the chapter, which is algebra, mean this chapter involves algebra, algebraic expressions and algebraic formulas. So first you must know the definition of algebra. What do you mean by algebra? Before starting the chapter, you must know what are the objectives of today's class. So first, at the end of this class, students will be able to recognize the algebraic expressions, define polynomial and rational expressions, and also describe that a rational expression behaves like a rational number. So first you must know the definition of algebraic expression. The expression which consists of one or more variable. अलजब्रा 9th क्लास से 4-5 क्लास से नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है मैथमेटिक्स में. तो सबसे पहले अलजब्रा होता क्या है कि ऐसा एक्सप्रेशन, अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, और उसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हों. ऐसे एक्सप्रेशन को जो है वो अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है. फॉर एग्जांपल 2x plus 3y plus 6, this is an algebraic expression. 5n is also an algebraic expression. A minus b is also an algebraic expression. In first example you noticed that in first example include how many variables? 2 variables, x and y, and we have constant term at the end which is 6, while 2 and 3 are coefficients of variable. And in second example we have one variable n where we're having coefficient 5, and in second and third example we have 2 variables which are a and b having coefficients, both have coefficient 1. If there is a sign of equality in two algebraic expressions, then we will get algebraic equation. For example, 5x plus 7 equal to under root 2. 5x is variable and 5 is its coefficient, 7 is constant, under root 2 is also constant, and both algebraic expressions are equating with the sign of equality. Then we get an algebraic equation which is 5x plus 7 equal to under root 2. So this means if two algebraic expressions are equated with a sign of equality, then we will get algebraic equation. Next, you must know about polynomial. What do you mean by polynomial? Polynomial is an algebraic expression. ऐसा algebraic expression होता है जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो,
ठीक है। इंटीजर्स आपको पता है क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, these are non-negative integers, while in integers we have 0 -1 -2 -3 -4. दिस मीन्स ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर नेगेटिव ना हो, पावर फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो, बिकॉज जो नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होता है वो इंटीजर नहीं होता। तो इस वजह से इंटीजर क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, पावर ना नेगेटिव हो और पावर ना फ्रैक्शन फॉर्म में हो, और पावर एक सीक्वेंस में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में जो एक्सप्रेशन है उसमें आप देखें, विच इज़ ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन -1 एक्स पावर एन -1 प्लस ए एन -2 एक्स पावर एन -2 प्लस अप टू ए वन एन प्लस ए नॉट या ए ज़ीरो। दिस मीन्स डैट कि आपके पास जो पावर एक सीक्वेंस में डिक्रीज हो रही है। तो जो मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में, वो उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो लीडिंग कोफिशिएंट की जो मैक्सिमम पावर है डैट इज़ नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स नेक्स्ट there are different types of polynomial, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें जस्ट एक ही टर्म हो, एक से ज़्यादा टर्म्स ना हो, डेट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज़ नोन एज मोनोमियल। एंड सेकेंड टाइप इज़ बाइनोमियल, बाइनोमियल विच हैज़ टू टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हों, ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, बाइनोमियल। दो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, या एक आपके पास जो है वो वेरिएबल हो सकता है, एक कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स में उसमें एग्जांपल्स बहुत सारी आ सकती हैं। 2x + 7 हो गया, 2x + 2y हो गया, 3x + 4 हो गया। ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनोमियल। एंड थर्ड टाइप इज़ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा, जिसमें तीन टर्म्स इन्वॉल्व हों। फॉर एग्जांपल 5x - 2y + 4z। इन दिस एक्सप्रेशन, in this polynomial involve three terms, so that's it is categorized in trinomial. These are different examples of polynomial. For example, 3x + 2y plus, this is a polynomial 2x + y plus z. This is also polynomial. First example, we have two variables and no constant, no individual constant. These are constants but they are coefficients of variable. Okay, and if I ask a question, what is the degree of polynomial in first example, so you must know that this polynomial has maximum power 2, x की पावर 2 है ना, तो मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि its degree is 2. Similarly, in second example, we have three different variables x, y and z, all have पावर 1. अगर पावर मेंशन ना हो तो इसका मतलब है कि उसकी पावर 1 होती है। तो अगर तीनों की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है तो दिस मीन दिस होल पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री 1. Similarly, in third example, power 3x + 1, which involve a constant, 1 is constant, while 3 is a coefficient of variable x, and its degree is also 1. And in fourth example, 2x² is also a polynomial. If I ask a question, categorize these examples as a monomial, binomial or trinomial, so you must identify that first example have two terms. ठीक है, first term is 3x and second term is 2y. They are coordinated with a sign of addition, so this means it has this expression has two terms, so this is binomial. In second example has three terms, so this is trinomial. In third example, two terms, binomial. And in fourth example, there is only one term, so it is monomial. Self testing, justify the following as a polynomial or not a polynomial. तो 2x + 3, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो यहाँ पर देख लें कि फर्स्ट वाले में कोई नेगेटिव पावर नहीं है, कोई उस फॉर्म में नहीं है, आपके पास कोई नेगेटिव पावर नहीं है, और इसके अलावा कोई फ्रैक्शन फॉर्म में पावर नहीं है, तो दिस मीन दिस इज़ अ पॉलिनोमियल. इन सेकंड एग्जांपल 5xy - 6x² + 17y/5, this is also binomial and it involves three terms, so this is trinomial. These are types of polynomial. And third one,
4/x plus y. This is not a polynomial. Why this is not a polynomial? Because अगर आप x को ऊपर न्यूमिनेटर में लेकर आएंगे तो x की पावर 1 की जगह क्या हो जाएगी -1। जब भी 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी टर्म को न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर उसका इंटरचेंज किया जाता है तो उसकी पावर जो है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो x जब ऊपर जाएगा x रेज़्ड पावर -1 हो जाएगी। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। सेम केस फॉर एग्जांपल नंबर 4 √x। √x मीन x रेज़्ड पावर 1/2 और पावर जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में आएगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है कि जिसमें आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस डिवीजन फॉर्म में हो, ऐसा एक्सप्रेशन विच इज़ इन क्वोशिएंट फॉर्म ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिसमें दो पॉलिनोमियल हो, न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, दोनों में डिवीजन का साइन हो। डैट रैशनल एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड that algebraic expression is known as rational expression. For example, we have different examples: x by y minus a by 4, m plus 4 by m plus 2, 8x square minus 2x plus 5 by 4x square plus 5x, or x power 5 can be written as x power 5 by 1। तो इसमें लास्ट एग्जांपल में देखें तो आपको कोई वेरिएबल तो इन्वॉल्व डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें आप x रेज़्ड पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल अपने पास से भी लिखा जा सकता है बिकॉज एनी वेरिएबल रेज़्ड पावर 0 इज़ 1। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। मैथमेटिकली रैशनल एक्सप्रेशंस किस फॉर्म में, जैसे रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स में आपको पता है रैशनल नंबर्स के होते हैं जो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो दीज आर नोन एज अलजेब्रिक रैशनल एक्सप्रेशंस which can be written in p/q form, where p and q must be polynomials and denominator must not be equal to 0. Now you have to identify the following as a rational expression or not a rational expression. In first example, 3x square plus 2x minus 4 by 4x minus 5. Is it a rational expression? Your answer must be yes. Why? Because in numerator एंड डिनोमिनेटर बोथ है पॉलिनोमियल। ठीक है, दोनों में पॉलिनोमियल है ना। जैसे देखें ऊपर क्या है, पहले x पावर 2 है, फिर x पावर 1 है, फिर नेक्स्ट में x नहीं, तो इसका मतलब x पावर 0 है। और डिनोमिनेटर में 4x माइनस 5 x रेज़्ड पावर 1 है। मीन कोई ऐसा आपके पास एक्सप्रेशन नहीं जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में हो। तो जब भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ रही तो दिस मीन डेट इज़ आ पॉलिनोमियल। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में 4x प्लस 3y बाई 2x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4y स्क्वायर है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में 3x स्क्वायर प्लस 4। ये आपके पास 3 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। सो योर असाइनमेंट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 and 2 बेस्ड ऑन polynomial and rational expressions. So you must solve. Hopefully you will do this assignment in 1 or 2 minutes, just for 1 or 2 minutes. So do these questions on your notebook, and your next class will be based on elaboration of rational expressions. जिस तरह क्लास में एक्सप्लेन किया जा सकता है उस तरह तो यहाँ पर नहीं बताया जा सकता है, लेकिन विश यू बेस्ट लक। जज़ाकल्लाह।